अनुज को भेजना है, मैंने अमित को कर दिया, भेजना है। हाँ। ओके। अब सेंस में ही बोलना। Our class will start soon. Yes, Pradeep, you are visible now.
All set, people. People are joining. Let's wait for some time. We can wait another 5 minutes before we begin. 5 मिनट का गैप लेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं। तब तक अपना मैट, अपने पास एक बोतल, एक कुशन रख के आप रेडी रहिए। First of all, can everyone hear my voice? Can everyone hear my voice? If you can hear my voice, please drop me a thumbs up on the YouTube video. Either drop me a thumbs up or drop me a heart symbol, some sign so that I know that you can hear me. अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो एक लाइक दबा दीजिए या फिर कोई हार्ट सिंबल दबा दीजिए ताकि पता लगे कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। If you have subscribed to our channel, you can also comment. It may take a minute or so. So to comment on the video, you will have to first subscribe. हम नहीं चाहते कि कोई भी आके कमेंट करना स्टार्ट करे, इसलिए we have kept a policy that whoever is subscribing is a part of our channel can comment. So whoever has joined, I see that around people are joining, some people are joining. Come on, guys, start joining. Orientation class is very important to understand what is going to follow for the next 14 days. 14 डेज की हमारी जो जर्नी होगी योगा में, क्या होने वाला है, इसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी। We will just take another 2 minutes. So at 6:50 IST Indian time, we are going to start. 5 people have joined, more are to be expected. Okay, one of the students is saying the voice was not so clear. Thank you so much for clearing. Let us know if the voice is better now. Yeah, there is one student who has mentioned the voice is not very clear. Please let us know if you can hear my voice better now. 6 students have joined. Pradeep, let's start. Yes, let's start. Stop. So everyone is ready.
We'll begin today, being the orientation class, being the first class of understanding how things are going to follow. We will only focus on how to breathe properly. Yeah. So, although हमारा गोल है हम वेट लॉस पे काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करेंगे, स्ट्रेस रिलीफ पे काम करेंगे, ये सब तो है, लेकिन सबसे पहले बेसिक होता है योगा में कि हमारी ब्रीदिंग ब्रीदिंग का जो पैटर्न है वो कैसे है. तो आई विल फर्स्ट शेयर यू द पीपीटी दैट वी हैव मेड. Yeah, let me know if you can see the presentation. Okay, everybody, can you please confirm if you can see the presentation? Okay, so we'll start with the breathing fundamentals. And as we all know, breathing है तो सब कुछ है. Life breathing से ही आता है. Okay, so breathing is the basic of your calming down your nervous system and regulating your nervous system. Pradeep, I think your video is not visible. Would you like to say something, Pradeep? Let's see if you can, when you talk, your video comes on. Uh, I press this icon, camera icon. Is this visible now? Yeah, when you talk, you're visible. Okay. Okay. So I will be talking about the exercises that we are going to practice, and then you can give basic instruction and start demonstrating the exercises whenever we need. Yes. Yes. So yeah. So as the title says, the foundation of yoga and living with calm. Yeah. How we breathe shapes our energy, stress levels, and health. So, because we all think that breathing is very simple, है ना, ब्रीदिंग को हमने काफी कैजुअली ले लिया है. ब्रीदिंग को जैसे अजम्पशन पे लिया हुआ कि वी ऑल कैन ब्रीथ, वी नो हाउ टू ब्रीथ, यू नो, बट डू वी रियली have the right way of breathing? Does everyone breathe with a skill? Breathing, although everyone does it, it's a skill to be learned. Yeah. Most often, when we see from a yoga teacher's perspective, we notice that people go through shallow breathing, upper chest breathing, और most people complete exhalation पे focus ही नहीं देते. ओके, एक सांस ली, दूसरा एक्सेल करने से, पूरा एक्सेल करने से पहले और एक सांस की तैयारी चल रही होती है. तो इससे होता क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम को एक स्ट्रेस का सिग्नल मिलता है. यस. सो ब्रीदिंग इज अ स्किल, ऑल्दो वी डू इट राइट फ्रॉम आवर बर्थ, इट्स अ स्किल टू बी लर्नड एंड इट्स अ स्किल फॉर लाइफ. जब से हम बॉर्न हैं, जब तक हम हैं, तब तक ब्रीदिंग इज ऑलवेज देयर विद अस. सो द फर्स्ट बेसिक्स ऑफ लर्निंग हाउ टू ब्रीथ इज, इस मैसेज को आप याद रखिए. एम्प्टी योर बाउल, एम्प्टी योर वेसल. आप देखेंगे कोई भी बड़े चाइनीज मास्टर्स हो गए, बोधि दामा हो गया, कोई भी ऋषि हो गए, हमेशा आप उनसे बात करेंगे ना एज अ स्टूडेंट, आपको वो फर्स्ट लेसन यही बोलेंगे कि एम्प्टी योर वेसल, एम्प्टी योर बाउल. मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि व्हेन वी आर फुल, व्हेन वी थिंक इन टर्म्स ऑफ ब्रीदिंग, अभी जो मैंने पहले कहा, जब चेस्ट में ऑलरेडी ऑक्सीजन भरा हुआ है, सांस भरी हुई है,
और हम एक्सेल पे ध्यान ही नहीं दे रहे और हम नेक्स्ट ब्रेथ का ऑलरेडी सोच रहे हैं, वहां पे स्ट्रेस सिग्नल बॉडी को मिलने लगता है। तो एम्प्टी योर बॉल एक सिंबॉलिक मैसेज है आज सबके लिए जो भी ओरिएंटेशन क्लास में है। एम्प्टी योर बॉल इज अ सिंबॉलिक मैसेज टू टेल यू कि एक्सेल कंप्लीट होना पड़ता है इन अ रिलैक्स्ड वे। ओके, एक्सेलेशन creates the space for the diaphragm to descend, and deep inhale is only possible after a complete relaxed exhale. हमने काफी बार सुना होगा टेक अ डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। दैट इज गुड, बट इवन बिफोर वी डू दैट, what is more important is we exhale completely. Now Pradeep is going to demonstrate कि there is something called as paradoxical breathing. Okay, paradoxical breathing नाम की एक चीज होती है। So Pradeep is going to demonstrate what paradoxical breathing means is ब्रीदिंग हम अपर चेस्ट में लेते हैं, ना कि हम पेट में लेते हैं। ओके, सो प्रदीप, इफ यू कैन डेमोन्स्ट्रेट बाय लाइंग डाउन ऑन द मैट। Yes. So first I will briefly give you the instructions, then you can explain it in your way so that you are visible on the video. Yeah, so place one hand on your chest, one hand on your abdomen. One hand on chest. Now, he's going to just notice how the movement of abdomen and chest happens. Yes, he's just going to notice the movement of abdomen and chest. Simply place Okay. one palm on the chest, other on abdomen. Simply notice the breath. Notice the movement of chest and abdomen happening with inhalation and exhalation. Now, to demonstrate paradoxical breathing, which is usually most of the people do, is breathing in the chest. So when we breathe, the chest comes up with inhalation. So this is more of thoracic movement, expansion in thoracic region. I hope this is clear. Over to Sushant. Yes. Now notice when he has placed the hands, one hand on the abdomen, on the chest. Yeah. Just now what he explained, when he breathes in, his abdomen comes up first. Yeah. And when he breathes out, the abdomen goes down. So none of the movements are happening at the upper chest. Upper chest movement means what? It's again a stress signal. You'll see people who are working in the offices, who have to sit for long hours, who have to be in a fixed position for long hours. They are always breathing in the upper chest, mostly because you could be wearing tight clothes, your abdomen is shrinking. So the diaphragm is hardly used. Diaphragm उसमें यूज ही नहीं होता है, सारी ब्रीदिंग अपर चेस्ट में होती है। अपर चेस्ट एरिया जो होता है, that is where the stress hormones are released. Now, can we say that upper chest breathing is always bad? जरूरी नहीं है। अगर स्ट्रेस फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन आ गई, मान के चलिए आपके पीछे अचानक से कोई पागल कुत्ता पड़ गया, या कोई जंगल में कोई सिचुएशन आ गई जहां आपको दौड़ना है, जहां आपकी एनर्जी चाहिए, स्ट्रेस आपको थोड़ा बॉडी में चाहिए,
वहां पे अपर चेस्ट ब्रीदिंग विल नेचुरली हैपन. Okay, the body itself will start breathing in the upper chest and start running and start producing more energy. But ऐसे situations कभी कभी ही आते हैं, छोटे टाइम के लिए ही आते हैं. For the longest time in our life, what we want is to relax. मैक्सिमम टाइम जब हम काम कर रहे हैं, घर पे हैं, सो रहे हैं, हमें रिलैक्स स्थिति चाहिए होती है. At that point, we don't want to be under tension and lot of energy happening all the time. तो आपको अगर रिलैक्स होना है तो एब्डोमिनल ब्रेथ, डायफ्राग्मेटिक ब्रेथ सीखना बहुत जरूरी है. ओके, नाउ हाउ टू लर्न प्रॉपर डायफ्राम ब्रीदिंग. One way is if you have something like a small pillow or something of a kg, 1 kg, 2 kg bottle भी रहेगा आसपास, तो you can place it on your abdomen and you will feel the need to breathe through the belly. So, Pradeep, if you have a small piece of block or a bottle, if you can place on the abdomen, anything small which is of a kg or 2 kg. सो जो भी घर पे देख रहे हैं, आपके पास अगर कुछ 1 से 2 किलो की चीज है, एक नोटबुक भी चल जाएगा, डायरेक्टरी टाइप कुछ है तो चल जाएगा, मोटी बुक चल जाएगी, कोई ब्लॉक है तो चल जाएगा. ऐसा कुछ भी आप अपने पेट पे रेस्ट कीजिए, हाथ साइड में रेस्ट कर सकते हैं. ओके, एंड डोंट हैव टू स्ट्रेस और फोकस टू हार्ड ऑन द ऑब्जेक्ट. जस्ट नोटिस कि एब्डोमेन पे कुछ रखा है आपने. बॉटल भी हो सकती है, 1 किलो की, 1 लीटर की, आधे लीटर की. एंड जस्ट ब्रिंग योर अटेंशन टू द एब्डोमेन. When you breathe in, breathe out, how the bottle is naturally lifting. तो इस प्रैक्टिस को कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, डायफ्राम ब्रीदिंग. और ऐसा करने से आपके डायफ्राम के मसल्स एक्सरसाइज हो रहे हैं नेचुरली. ओके, आई वुड लाइक यू टू एटलीस्ट ब्रीथ दिस वे फॉर अनदर 2 to 3 minutes Yes. and bring more awareness to your exhale. एक्सेल जैसे कि हमने पहले वाले स्लाइड में कहा था, एक्सेल पे ध्यान रखो. Complete exhale every time, and when you're inhaling, let the belly rise up naturally and just hold your attention on the object which is kept on your abdomen. This builds a mind body connection. जो हम इतना सुनते हैं mind body, ये क्या है? This is a mind body practice. Now in today's life, just about everywhere इतना फोन आ गया है, इतना हमें ऑनलाइन काम पे लगे रहना पड़ता है. देयर इज सो मच ऑफ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस दैट कम. ये हमें बॉडी माइंड कनेक्शन से दूर लेके जाता है. एंड बॉडी, माइंड and your breathing, these are the only 3 real friends that you have for life. From the time you're born till the time we are there on earth, हमारे साथ हमेशा कौन रहेगा? हमारा माइंड हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारी ब्रेथ हमेशा हमारे साथ रहेगी, और हमारी बॉडी लास्ट दिन तक साथ रहेगी. तो बॉडी माइंड कनेक्शन को डेवलप करना, उस स्किल को सीखना is one of the most important skills that you will ever develop. And once your body mind, why, you may ask why it is so important कि हम body mind skill को develop करें. तो body mind skill, once you have a good connection, good marriage between the body and mind, your focus is so well developed that you can just about
transfer your focus to any other work that you're doing. और कुछ भी आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, किचन में कुकिंग कर रहे हैं, कुछ भी ड्राइविंग कर रहे हैं, बॉडी माइंड कनेक्शन स्ट्रांग होगा तो ही आपके बाकी कामों में ये रिफ्लेक्ट करेगा. It will reflect in every part of your life. Now, yeah, I suppose we have practiced it enough. Going to the next practice. Give me just a moment. We did diaphragm breathing. We did relaxed breathing. Now, I would like Pradeep to, after having understood diaphragm breathing, I would like Pradeep to demonstrate the alternate nostril breathing. ओके ये एक बहुत कॉमनली वेल नोन ब्रीदिंग है एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डिस्ट्रेस एंड ऑल्सो एक्टिवेट द नाडीज. हमारे शरीर में मेनली योगा स्क्रिप्चर्स में 3 नाडीज का मोस्ट डिस्क्रिप्शन किया गया है. ओके, वन इज ईडा नाडी विच इज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, अदर इज द पिंगला नाडी, and in between through the spine goes the सुषुम्ना नाड़ी. ओके, ईड़ा नाड़ी का जो काम होता है हमारे शरीर में, ईड़ा नाड़ी रिप्रेजेंट्स द कूलनेस, मून एनर्जी. ओके, व्हाट इज कूलनेस, मून एनर्जी अगर हम पूछते हैं, सो जस्ट लाइक वी एक्सप्लेन्ड अर्लियर, फाइट और फ्लाइट स्टेट होती है और रिलैक्स स्टेट होती है. ईड़ा नाड़ी is the relaxed state of being and Pingala Nadi is supposed to be the more active side of being. तो पिंगला नाड़ी का काम होता है शरीर में एनर्जी को इंक्रीज करना. ओके, एनर्जी टू डाइजेस्ट द फूड, टू बिकम मोर एक्टिव एंड स्टार्ट मूविंग. ओके, पिंगला नाड़ी इज सपोज टू बी, या पिंगला नाड़ी इज द वन दैट मेक्स यू मोर एक्टिव, और ईडा नाड़ी जो होती है वो आपको रिलैक्स, कामिंग एंड इट ब्रिंग्स यू टुवर्ड्स स्लीपीनेस. ओके, सो व्हेन वी स्टार्ट डूइंग ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जिसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, तो इसमें दोनों नॉस्ट्रिल्स का अच्छा बैलेंस बन के आता है. बट आर वी सपोज टू स्टार्ट विद द ब्रीदिंग राइट अवे? No, we'll be doing a few preparatory exercises before we get to that. So, Pradeep, I'll be following up with the instructions. You can continue with the movement. Yeah. So, first we'll do re-stretches, stretching your hands to the front, shoulder height. Yeah. And start making wrist rotations in to out. Yeah. You can also open and close your fingers. हाथ को सामने कीजिए, रिस्ट रोटेशन. आज जो भी हम कर रहे हैं बहुत लाइट और सिंपल, बस बेसिक को हम टच कर रहे हैं, ब्रीदिंग को समझ रहे हैं. आज आप मैट पे आए, आपने अपने बॉटल के साथ, इफ यू केम टू द मैट, यहाँ पे 10 लोग, करीबन 12 लोगों ने ज्वाइन किया है. वेरी वेरी थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड फॉर यू टू ज्वाइन द क्लास. जिन जिन लोगों ने यहाँ पे आज आए हैं, हमें सिर्फ बेसिक सीखने. ओके, आप आए, ये आपकी फिटनेस जर्नी का स्टार्ट हो गया. ओके, नाउ फिंगर टिप्स ऑन योर शोल्डर्स. प्रदीप, elbows close to each other. We'll be doing some shoulder rotation just to open up the body. Elbows close. Now inhale, yes, stretch your elbows back and forward and see if you can bring the biceps close to the ears as you make the circular movements. अब इसमें भी आप जब इसके प्रदीप के साथ प्रैक्टिस कीजिए, so what you'll notice is when you're doing this practice, your lungs are stretched. आपको breathing deep लेनी पड़ेगी. Anatomically आपके lungs इस तरह से stretch हो जाते हैं कि that your breathing will start deepening. See, if you can hear Pradeep breathing. Now reverse. Reverse.
Okay. Now we will come on the hands and knees. Cat and cow stretch हम करने वाले हैं. इसका क्या, what is the reason? Is we want to activate the spine. Okay. Spinal nerve, spinal muscle जब activate होते हैं, then the diaphragm also starts activating. Okay. So coming on the hands, keep your fingers wide open. And always the index finger is pointing to the front. Yeah, relax your feet. Now, as you inhale, look up and gently arch your back. Exhale, chin down, round your back. Yeah, notice this movement of the spine as Pradeep is practicing. Inhale, look up. Allow all the vertebrae to start moving, start lubricating the joints of your spine. Exhale, round the back. When you're rounding, also engage your abdominal, your core muscles. Inhale, exhale. Beautiful, Pradeep. Now, for some of us who are not used to हाथ पे घुटने पे रहने की, जिनको आदत नहीं है, ये ज्यादा अगर हो रहा है, तो आप थोड़ा सा कुशनिंग या मैट को फोल्ड कर सकते हैं हाथ के नीचे अगर जरूरत हो तो. ओके. क्योंकि जो हम नेक्स्ट मूवमेंट करने वाले हैं उसमें हम we are going to put little more engagement of the shoulders and other aspects. So now as you inhale, Pradeep, stretch your right leg back like Vyagra Asana and arch your back. And as he stretches the leg, he's slightly holding it for a time. तुरंत आगे नहीं कर रहा है वो, थोड़ा होल्ड कर रहा है, सांस को भी होल्ड कर रहा है. Exhale and slowly bring your knee close to your forehead or your chest wherever it is comfortably possible. पहला दिन है, जितना होता है उतना ही प्रैक्टिस कीजिए. नाउ वी आर गोइंग टू ऑल्टरनेट द लेग्स. राइट हुआ, अभी लेफ्ट से करेंगे. इनहेल, लेफ्ट लेग बैक, आर्च, ब्रीद इन, यू कैन होल्ड. Exhale and knee to the forehead, to the chest. Inhale, right leg back. Yeah. Arch your back, engage your core muscles. Exhale, knee to the forehead, to the chest. Inhale, left leg back, look up, whole spine movement. अगर किसी के हाथ थक गए हों, shoulders थक गए हों, you can also rest in child's pose. Pradeep, you can just show them child's pose if someone wants to rest. हम और 2 cycles करने वाले हैं. अगर थकान आ गई हो, you can always rest like this. Not, then Pradeep will do 2 more on each side. He's breathing in, stretching back, breathing out, knee forward. इससे क्या होता है कि spine starts activating, and because the whole spine is connected with our ida and pingala. ida pingala जो है हमारे बेस ऑफ द स्पाइन से लेकर हमारे बैक ऑफ द हेड तक पूरा कनेक्टेड होता है. तो जब हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, हम नाड़ीज को एक्टिवेट कर रहे हैं. Okay, now he is well prepared. Hopefully the lungs, the nostrils are open naturally. दोनों इडा पिंगला को हमने काफी हद तक एक्टिवेट किया है. Now we'll sit in a comfortable posture. Okay. And now to demonstrate Nadi Shodhan, with your right hand we will be holding the Vishnu Mudra. Vishnu Mudra कैसे hold करते हैं? With the
index and the middle finger folding. Pradeep, if you can come a little more closer to the camera and show them so that it is clear. Yeah, Vishnu Mudra. Vishnu Mudra. Fold first two fingers, index finger and middle finger on thumb pad. Like this. So while doing Nadi Shodhan, we use the thumb to close right nostril and ring finger to close the left nostril. Now, कुछ लोगों को अगर क्वेश्चन आ रहा हो कि ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल प्रैक्टिस है, ये तो हम ऐसे ही राइट हैंड से कर लेते हैं, राइट हैंड ही क्यों, विष्णु मुद्रा ही क्यों? अगर किसी को सवाल आ रहा है तो इट्स अ वेरी गुड साइन दैट यू आर अ इंक्विजिटिव स्टूडेंट। आपको जानना है कि हम क्या एग्जैक्टली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप इस मुद्रा का नाम भी देख लीजिए, विष्णु मुद्रा, है ना? नाम से ही हमें हमारे कल्चर में इस तरह से चीजों को डिजाइन किया है, वेदास में इस तरह से डिजाइन किया है कि नाम से ही काफी कुछ पता लग जाता है। विष्णु भगवान जो हैं, विष्णु, लॉर्ड विष्णु is always considered, is related with maintenance of the universe, maintenance of the energy. तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हमेशा ट्रिनिटी को साथ में हम बुलाते हैं, साथ में याद करते हैं। विष्णु is the maintainer of energies, maintainer of prana, of your nervous system. तो विष्णु मुद्रा में हम इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को जब फोल्ड करते हैं तो जो एयर एलिमेंट होता है, वायु एलिमेंट होता है, जो ऊपर की तरफ जाता है, जो हमारे विचारों को यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट करता है, उसको हमने पहले से बैलेंस में लाया है, सप्रेस किया है। ओके, द एलिमेंट दैट डिस्ट्रैक्ट्स यू फ्रॉम डूइंग अ फोकस प्रैक्टिस, उसको हमने शांत किया है विद द थंब ऑन टॉप। So even in his bodily energies, he's trying to slow down the energy currents which go too fast here and there. Having done that, now he's beginning with alternate nostril. So the steps are, Pradeep, you can go very slow, very detailed with the step. Yeah, teach them Okay. step by step. Now, to practice Nadi Shodhan Pranayam, first close your right nostril with thumb. Once you close, exhale completely through the left nostril. Once you exhale completely, take a deep breath in through left nostril. Once you complete the inhalation, close the left nostril with ring finger. Now, in the beginning, we are not holding breath for too long. So let's say we hold breath for 5 count. Now we exhale through other nostril. Remove the thumb, lift your thumb, exhale through right nostril. Exhale completely, exhale with control. Once you breathe out completely, take inhalation through right nostril. Inhale deeply. After inhalation, close the right nostril with thumb. Hold the breath for 5 count. 1, 2, 3, 4, 5. Lift the ring finger and exhale through left nostril. Slow and complete exhalation through left. This is one complete round of Nadi Shodhan. We started with left nostril. We came back to left and with left nostril. This is one round. Like this, we practice 5 rounds today. So again, close right nostril with thumb. Slowly breathe in through left. Hold the breath and close both nostrils.
Hold for 5 count. 1, 2, 3, 4, 5. Lift thumb. Exhale through right. Slow and complete exhalation. Start inhalation through right nostril. Deep breath in. Breathe in to your maximum capacity. Then hold the breath. Close both nostrils. Hold for 5 count. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale through left. Breathe in through left. Hold your breath. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale through right. Again, inhale through right nostril. Hold the breath. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale through left nostril. Breathe in through left. Hold the breath. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale through right. Slow and complete exhalation. Breathe out slowly. Empty the lungs. Slowly breathe in. Breathe in through right. Hold breath in. Close both nostrils. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale through left. Inhale through left. Hold breath. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale through right. Inhale deeply, slowly. Hold breath in. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale through left. Now release. Relax your arms. Keep your spine straight. Simply observe the breath. Yes, So we very did. beautifully explained by Pradeep. Now, yes, now we'll go. Today, since we are started the practice in the evening, very important we do all relaxing practices. Yeah. So now that you have practiced alternate nostril नाड़ी शोधन प्राणायाम किया है हमने, हमेशा अपने sensations पे ध्यान रखिए. What is the sensation that you're feeling right now? How do you feel? Where is the breathing? Where is the breath? Chest में feel हो रही है, abdomen में feel हो रही है. How do you feel mentally, emotionally, calm, balanced? Just notice the feeling. No judgment, nothing of observing, just your body, just your sensations. Give little time before we start with the next practice.
So next we are going to be practicing Bhramari Pranayama. Okay, Bhramari is a very beautiful meditative breathing practice, and it's also like a life hack. जैसे जिंदगी में आप एक स्टेप 10 स्टेप आगे बढ़ सकते हैं अगर आप समझ गए कि भ्रामरी प्राणायाम कितना इफेक्टिव और कारीगर होता है हमारी लाइफ में. Although it is just considered one of the pranayamas, like several pranayamas we practice, Bhramari practice करते हुए the brain relaxes or goes to a different level of consciousness, जिसे हम कहते हैं unconscious alpha state जो होती है. The alpha state is supposed to be one of the most productive, most healing states for the body. जिस स्टेट में बॉडी ओनली हील करती है, ना कि और डिट्योरेट होती है. जैसे हम जिंदा जिंदगी जी रहे हैं, पैदा हुए हैं, तब से बॉडी इज ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ एजिंग, डिट्योरेटिंग. But when we are in the alpha state, the body stops aging for a while. Okay, it takes a pause and it's in the most calm and efficient state जब हम alpha state में सोचते हैं या फिर होते हैं. तो भ्रामरी एक ऐसा जैसे शॉर्टकट है कि जब हम उसे प्रैक्टिस करते हैं तो we easily can get into this alpha state. Now, Pradeep is going to demonstrate with instructions. At least 6 to 7 rounds practice करने होते हैं. शोल्डर पोजीशन, आर्म पोजीशन कैसी होगी, हाथ थकते हैं तो क्या करना है, एवरीथिंग प्रदीप इज गोइंग टू एक्सप्लेन. ओवर टू यू प्रदीप. Yes. Now, Brahmari Pranayam. To practice Brahmari Pranayam, we make humming sound from the base of throat. So, with your thumb and fingers, close your ears with thumb, close your eyes with index finger, place your middle finger and ring finger on nostrils and upper lip, little finger on the lower lip. This represents Sanmukhi Mudra. Sanmukhi Mudra is closing the 7 doors. We close our eyes, ears, and mouth, nose. In Brahmari Pranayam, we practice with retention of breath. That is the advanced practice. That's why Sanmukhi Mudra, closing the all 7 doors. We close ears, eyes, nose, and mouth when we are holding the breath. When we exhale, we make humming sound from throat. Today we practice without holding the breath. Simply inhale through nostril. While breathing out, make humming sound. Take deep breath in. Practice 5 more rounds.
complete this round and release. Relax your arms, your shoulders. Keep your spine straight, the rest of the body loose. Feel the sensations, the vibrations in the body. Keep your eyes closed for a few moments. तो अगर आपने नोटिस किया, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड बाय प्रदीप, इसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई मेंशन्ड कि अनकॉन्शियस स्टेट को भी हम टच कर लेते हैं, सुपर कॉन्शियस स्टेट को हम टच कर लेते हैं इस प्राणायाम के प्रोसेस में. ऑल्सो डिड यू नोटिस क्षणमुखी मुद्रा? इससे क्या हो रहा है, हमारी शरीर की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, सब कुछ जो भी हम लाइफ में करते हैं ऊर्जा से ही डिटरमाइन होता है कि हम लाइफ में कितना कुछ कर पाएंगे. एनर्जी नहीं, ऊर्जा नहीं, तो मन में कई विचार, गोल्स हो सकते हैं, लेकिन अचीव तभी कर पाते हैं व्हेन वी हैव इनफ एनर्जी. व्हेन वी स्पीक ऑफ एनर्जी, डू यू नो दैट द ब्रेन अलोन takes 20% of all the energy you get from the food, sunlight, जो भी हमें एनर्जी मिलती है, ब्रेन इतना सा स्मॉल स्पेस लेता है शरीर में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा एनर्जी थिंकिंग और ब्रेन से चली जाती है. किसी भी टाइप की थिंकिंग, ओवर थिंकिंग हो, आप वरी हो रहे हैं, आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आप गुस्सा हो रहे हैं, आप जॉयफुल हो रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, जब आप थिंकिंग कर रहे हैं, वेन एवर यू आर थिंकिंग, योर ब्रेन इज कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ ग्लूकोज एंड एनर्जी. In Shanmukhi Mudra, all the five, all the senses, eyes, his ears, and his mouth, also his closing. Okay, so all these energy centers जहाँ से एनर्जी बाहर जाती है, आंखों से, कान से भी एनर्जी जाती है जब हम ज्यादा सुन रहे होते हैं. और यही तो आज की दुनिया में हो रहा है कि इतना डिस्ट्रैक्शन हमें फोन से, सोशल मीडिया से जो आता है, all those distractions is closing in Shanmukhi Mudra. So एक तो हम inward बनते जा रहे हैं. We are becoming more. That was the reason I am saying this practice makes you more meditative. So we are becoming meditative, and you are producing a sound that creates vibration right up to inside your brain, and it refreshes the neurons, your brains. It gives new energy, new vibrations. Second thing to notice during this practice, your exhale, as I mentioned earlier in the presentation, exhale becomes longer than the inhale. And this is the best state for our nervous system, for our lungs to absorb more oxygen, also for your heart. जब भी हम सांस जितने भी टाइम में अंदर ले रहे हैं और सांस लंबा छोड़ रहे हैं, our exhale is longer than the inhale. This is the most relaxed state. Relaxation इसी ब्रीदिंग स्टेट से आ सकती है. नो अदर स्टेट ऑफ ब्रीदिंग विल रिलैक्स योर नर्वस सिस्टम लाइक दिस पर्टिकुलर पैटर्न. फास्ट ब्रीदिंग, कपालभाति करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, उससे नर्वस सिस्टम बस और टेंस हो जाता है. उसका भी यूज है, इफेक्ट है, बेनिफिट है, लेकिन वो हम दूसरे क्लासेस में सीखेंगे. पहले हम आज बेसिक सीख रहे हैं कि लॉन्ग एक्सेल करने का और एक तरीका हो गया. तो having learned that, we still have 10 minutes. So before going into Shavasana, one last practice that I would like Pradeep to demonstrate is the Ujjayi breathing. Ujjayi breathing literally translates to victorious breath. Okay, victorious breath, यहाँ पे क्या जीत रहे हैं हम, victory किस बात की हो रही है? So it depicts many things. Victory over the prana, over the energy, victory over your mind. Why this breathing brings more control over your thoughts, over your mind. And much more details Pradeep is going to explain and also demonstrate. So for the Ujjayi breathing, if you need to sit a little closer, Pradeep, it would be better for them to understand कि Ujjayi breathing करते कैसे.
एंड इस ब्रीदिंग को थोड़ा टेक्निकल होता है ये, तो हर कोई पहली बार में समझ जाए, sometimes it may not happen. So give yourself enough time. It takes many years of practice to master these exercises, these disciplines. Okay. So over to you, Pradeep. Now, to practice Ujjayi Pranayam, sit comfortably, keep your spine straight. In Ujjayi Pranayam, when we breathe out, we constricting the muscles around the throat. This is like when you say hi internally, HI. When you breathe out, try to make the sound of hi internally. Breathe in deeply and move your abdomen out like we practiced in abdominal breathing. Slowly and deeply breathe in. After inhalation, hold your breath for 3 to 5 count. While breathing out, constrict your throat. Squeeze the muscles around the throat. With the abdominal movement, we squeeze the muscles of throat while breathing out. Let's practice again. Slow and deep breath in. With inhalation, stretch your abdomen out. Once you feel you're full, hold your breath. Now slowly breathe out while squeezing the muscles around the throat. In the beginning, you might feel that this is difficult to constrict the muscles, exact muscles around the throat. Try this sound internally just try to make this high sound hi, not loud, only internally. You try to make that sound. In that effort, your muscles will squeeze. Let's practice few more times. Breathe in slowly. Stretch your abdomen out. Now hold your breath. Slowly breathe out while squeezing the muscles around throat. Slow and deep breath in. Hold the breath. Squeeze the throat, muscles around the throat, constrict and exhale.
and always keep a smiling face. Although the muscles are squeezed, keep a smile on face and practice. Over to you, Shashank. Very well explained. Thank you, Pradeep. Now, the last section of the class. Before getting into Shavasana, does any of you have any questions? आपको कुछ पूछना है? You can start commenting. Start on the comment section. You can ask any questions. We'll hold the seat for some time. We'll be waiting. किसी को कोई question हो, you can write down. We would love to answer. Today's class was very simple, just focusing on the basics कि breathe कैसे करते हैं. Tomorrow is going to be the class with movement, with many other aspects. लेकिन breathing की basic strong होना बहुत important होता है. ब्रीदिंग सही है तो बाकी एस्पेक्ट्स में भी इंप्रूवमेंट नजर आती है. Okay, as of now, there are not many questions for today. So we'll go ahead with the Shavasana. Shavasana, we just lie down on the back with your arms away from your body, legs away from each other. Shavasana. What does it mean? You lie flat, almost like a dead body. Shava, मृत शरीर. इतना अपने आप को रिलैक्स करना है कि पूरा शरीर जैसे बिल्कुल ही चेतना ही ना हो जैसे. और हम सोचते हैं रिलैक्सेशन शवासना इज स्लीपिंग. इज इट रियली जस्ट स्लीपिंग? इतना सिंपल है? इफ यू रियली अंडरस्टैंड, इफ यू रीड थ्रू द योगिक टेक्स्ट यू विल रियलाइज कि शवासन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पोस्चर्स टू मास्टर. व्हाई यू मे आस्क. करना क्या है? बस लेटना ही तो है. इसमें इतना डिफिकल्ट क्या है? वेल, लेटना ये सबसे सिंपल पार्ट है. बट इस आसन का the effect of this asana is most felt with your mind. Once you lie down, everything else you do after is with your mind. So the mind, the body, once it lies down, once the spine is flat on the ground, the body wants to go to sleep. Body को सोना है, totally सब कुछ ही छोड़ के सो जाना है. But Shavasana is not, or Yoga Nidra is not about sleeping. You are aware, you remain awake the whole time. But your whole body, your whole nervous system, your mind is in the most relaxed state. अब आप कहेंगे हम एक बार लेट गए तो हम रिलैक्स भी हो ही जाते हैं. बट क्या ये सच में सच है? क्या ये सबके लिए सच है? जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं तभी तो हमारा विचारधारा, हमारी विचार और तेज होने लगती है. हमें और थॉट्स आते हैं जब हम आंखें बंद करते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? हमारा लक्ष्य क्या है और हो क्या रहा? लक्ष्य है कि लेटना है, रिलैक्स करना है. बट और विचार क्यों आ रहे हैं? यही तो होता है ना बाकी चीजों में भी. यही तो है माइंड बॉडी. माइंड कुछ बता रही है बॉडी को, बॉडी बता रही है माइंड को चलो रिलैक्स करना है. लेकिन होता कुछ और ही है. ऐसा क्यों? बिकॉज द बॉडी सेंसेस आर ऑलवेज आउटवर्ड बाउंड. बाहर की तरफ हमारा लक्ष्य होता है हमेशा. आंखें बाहर की तरफ देख रही होती है, कान बाहर की आवाज सुन रहा होता है, नाक को स्मेल आ रही होती है बाहर से.
हर स्किन को भी एयर फील हो रहा है, ब्रीज फील हो रहा है, हर सेंस, हमारी बॉडी के 5 सेंसेस आउटवर्ड बाउंड है। एक तो ये कारण है कि इनका काम ही बाहर के इंफॉर्मेशन को लेना है और अपने शरीर को प्रोटेक्टेड जीवित रखना है, कि हम सेफ जोन में हैं ये जानना। ये हमारे 5 सेंसेस का बहुत बड़ा एक रोल होता है। और दूसरा, अगर हमारी बॉडी स्ट्रेस को स्टोर करके बैठी है, फ्रॉम इयर्स एंड इयर्स ऑफ स्टोरिंग द स्ट्रेस इन द बॉडी, हाउ डज वन स्टोर द स्ट्रेस? Stress can be physical, stress can be mental, stress can be emotional. But whatever stress is generated, there is good stress also. Good stress भी होता है, जैसे कि वॉकिंग करके आ गए, रनिंग करके आ गए, मसल्स थोड़ी ग्रो हो गई, दैट इज गुड स्ट्रेस। बट देर इज क्रॉनिक स्ट्रेस जो कि हेल्दी नहीं है, अनकॉन्शियसली बिल्ड हो रहा है। जैसे कि हम एक ही सीट पोजीशन में बैठ के काम कर रहे हैं, बैक इज राउंडेड, मसल्स आर गेटिंग टेंस्ड। इसको जब हम महीनों महीनों, सालों सालों एक ही पोजीशन में कुछ काम कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठ के बैक राउंड हो पड़ी है, और किसी टाइप का मेंटल स्ट्रेस है, सालों से अंदर बैठा हुआ है, उस किसी मेंटल इमोशनल इशू को आपने एड्रेस ही नहीं किया है, वो सारा स्ट्रेस जो होता है वो कहाँ जाएगा? शरीर में वो स्टोर हो जाता है। शरीर में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो स्टोर हो जाता है। किसी को अगर बहुत भय हो, फियर हो, तो वो किडनीज उस स्ट्रेस को प्रोसेस करती है, लोअर बैक में वो फील होता है। किसी को बहुत गुस्सा आता हो, एग्रेशन हो, तो लिवर उसे प्रोसेस करता है, उसका स्ट्रेस हमें नेक में, शोल्डर्स में फील होता है। किसी को अगर बहुत ज्यादा दुख पकड़ रखा है, किसी वजह से ग्रीफ है, बहुत सालों से ग्रीफ पकड़ रखा है, तो हमारी ब्रीदिंग शॉर्ट होती है, हमारा एलिमिनेशन, डाइजेशन स्लो हो जाता है, ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाती है अगर बहुत ज्यादा सैडनेस पकड़ रखी है। और इस तरह से अलग अलग सिस्टम, अलग अलग रीजंस होते हैं, उसका एक बहुत बड़ा लिस्ट है, हम आने वाले क्लासेस में इसको समझेंगे डिटेल में। तो ऐसे कई तरीके से स्ट्रेस हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है। और ये जो स्ट्रेस है वो अंदर स्टोर होके जैसे ही आप रिलैक्स होना चाहते हैं, तब ये बोलने लगता है कि भाई तुम, आंखें तो तुमने बंद कर दी, मेरे अंदर के जो केमिकल्स हैं, एड्रेनलिन है, जो कि रेस्ट करना ही नहीं चाहता रात को भी, वो आपको बताने लगता है कि अब मैं बहुत सारी एक्टिविटी अंदर से करना शुरू कर दूंगा। तो इस तरह से रात में जो आजकल स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया का जो प्रॉब्लम चल रहा है एवरीवेयर, इंसोम्निया इज अ वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक, इफ यू नो, इफ यू आर अवेयर अबाउट इट। पूरी दुनिया नींद ना आने से आजकल परेशान हो रखी है। एक तो हमारे जॉब्स ऐसे होते हैं, और दूसरा हमारा लाइफ का स्ट्रेस ऐसा होता है कि सब कुछ करने के बाद, थकान होने के बाद भी रात को नींद नहीं आ रही है। तो इस स्थिति में ये स्किल जो होता है शव आसन का, ये बहुत इफेक्टिव होता है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मन को चाहिए, हमारे माइंड को चाहिए, द माइंड नीड्स अ टूल टू फोकस ऑन। And focus is again not very high concentration. All it has to do is divert its attention from the everyday mundane things and bring the awareness to its again the body, the mind. जैसे मैं कह रहा था, mind body, very very important concept. तो बॉडी के ऊपर जब हम ध्यान देते हैं, now I'll be giving you some brief instructions to relax even deeper. Start relaxing your forehead. Simply let it loose, let it relax, just become aware, take the attention to your forehead, knee, forehead को relax कीजिए, eyebrows, eyebrows की तरफ ध्यान दीजिए, relax कीजिए, relax your eyes, eyeballs, eyes को relax तो कर दिया, अंदर भी कभी कभी टेंशन हम होल्ड करते हैं। Relax your eyes are closed, no need to
worry or think about anything, just relax your eyes. Relax your cheeks, गालों को relax कीजिए. Relax your jaw muscles. Totally let them loose. दांतों को relax कीजिए, टंग को relax कीजिए. हमारे जबड़े में, हमारे जॉ में बहुत सारा स्ट्रेस, दिन भर का स्ट्रेस, शरीर का स्ट्रेस वहां पे स्टोर होता है. तो रिलैक्स योर फेस. होल फेस इज कंप्लीटली रिलैक्सिंग. एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, योर फेस is connected to your whole body. Once you start relaxing your face, your body naturally follows. So give lot of time to relax your face. A smile on your face naturally coming up. जिंदगी में कितना कुछ है एंजॉय करने को, एक्सपीरियंस करने को. हम आते ही दुनिया में हैं टू फील जॉय. वी आर अ बंडल ऑफ जॉय व्हेन वी टेक बर्थ. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, यहाँ वहाँ की टेंशन लेके हम बॉडी को टाइट कर लेते हैं, स्ट्रेस कर लेते हैं. तो ये वो वक्त है शवासन, व्हेन वी गो बैक टू अवर होम, गो बैक टू योर चाइल्डहुड लाइक रिलैक्सेशन. Further down, relax your shoulders, relax your chest. Totally let go, surrender, surrender everything. क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे. Relax your abdomen. Completely relax. Relax your buttocks. नितंब को relax कीजिए. Relax your thighs. Simply let them be. जैसा है वैसा उन्हें रहने दीजिए. और आप पूरा अपना ध्यान रिलैक्स रिलैक्स करते हुए further down, bring awareness to your feet, to your calf muscles. Totally let them go. Completely let them relax. So many years your feet have been taking the weight of your body. पैर पूरे दिन भर आपका वजन ले रहा होता है, यहाँ वहाँ चल रहे होते हैं. उनको रिलैक्स छोड़ दो. टोटली रिलैक्स छोड़ दो. Now that your whole body is relaxed, turn your attention outside, outside your body, and just become aware of the surroundings, sound from the surroundings. कोई भी आवाज आ रही हो, पूरा शरीर जैसे आपका कान बन गया हो, पूरे शरीर से आप आवाज सुनिए. Sound of the fan, sound of some breeze. Maybe there are few kids running around in the house, in some other room. All the sounds, just simply hear them with a neutral mind. Listen to the sounds, let them come to your ears, let them go. React नहीं करना है, सुनना है और आवाज को जाने देना है. This is the way we are also training how not to be reactive. आवाज से दोस्ती कर लो, नॉइज से दोस्ती करो. Make friends with noise and yet remain relaxed and calm. Slowly come back to your body, come back to your breathing, and simply become aware how you're breathing right now. Is the breathing calm? Is the breathing slowed down? We'll slowly begin to move the fingers, move your feet, start slowly bringing more energy into your body, and roll your body to the right side.
Okay, don't immediately get up. Keep your eyes closed. Roll your body to the right side. Support your head, support your neck. And with time, once you feel everything is relaxed, slowly come up to sitting. Use your hands and come up. Don't jerk. ये बहुत जरूरी है कि जब हम रिलैक्स करें, इसी तरह से जब हम सुबह उठ रहे हैं, इसी तरह से रिलैक्स करके उठना है. Okay? Now we will have hands to the heart. Namaste position. We will chant A, U, Ma, Om 3 times to conclude the class. Yeah, Pradeep, go ahead, chant Om 3 times and then we'll conclude. Now rub your palms. Place them on ice. Gently press. Now slowly open your eyes. Look at your palms. Thank you. So be ready for tomorrow's class at 6:45. Thank you everyone who has joined. Gratitude, lots of thank yous and gratitude for joining. We are very happy to see that you started your health journey with us. And tomorrow at 6:45, the next class, the first class with movement and other aspects of yoga, we will be starting. So be ready by 6:40, 6:30 से ही आप ready रहिए, 6:40 को आप join हो जाइए और सारे notifications group में आ जाएंगे. We would look forward to seeing you in the class. Take care. Bye.